Okay. Now we are live. Assalamu alaikum. Yes, we are live. Assalamu alaikum. My name is Adil Ali. I'm Manager Monitoring Valuation, Learning and Development at National Innovation Center, Karachi. We are having our final pre-head shop today. We have Syed Abdul Basit with us. He's currently working with Venture Dive. He holds over a decade of experience in the field of IT. He was among the pioneers of Founder Institute in Pakistan. Karachi chapter ये lead किया करते थे. So the same Founder Institute curriculum that is operated and delivered at NIC Karachi. Basit also used to do it with other entrepreneurs from all across Karachi. आज हमारे साथ बासित जो मौजूद है, he will be discussing how startups can build up a viable and sustainable startup. अगर कोई ऐसा पैनलिस्ट या कोई ऐसा स्टार्टअप हमारे साथ या पार्टिसिपेंट मौजूद है जिसने पिछले सेशंस अटेंड नहीं किए थे, सो उनके लिए हम एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं कि दिस इज द फोर्थ बिल्ड बाय है. हम 2020 से हमने बिल्ड बाय करवाना शुरू कर दिया था. सो 2020 में हुआ था, 21 में, 22 के अंदर, 23 के अंदर होने जा रहा है. लास्ट ईयर वी हैड टू डिफरेंट ट्रैक्स. एक एशिया फाउंडेशन के साथ हम करवा रहे थे, दूसरा यूपीएल के साथ करवा रहे थे. दिस ईयर अगेन एशिया फाउंडेशन इज इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोग्राम. हम 4 मेन थीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. दैट इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज, सोशल जस्टिस, देन women economic inclusion and social, and there's one more, STEM education. Yes. So बात यही है कि हम सॉल्यूशंस किस तरह के बना सकते हैं, इन मसाइलों को किस तरीके से समझ सकते हैं. इसके ऊपर कुछ पहले सेशंस हो चुके हैं जब हम सॉल्यूशन को एक जिसे कह सकते हैं कि बेसिक रिसर्च कर चुके हैं. सो टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट सॉल्यूशन का सामने हमारे साथ एक सेशन करवाया था कि लो कोड और नो कोड लेवल के ऊपर आप किस तरीके से प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं. और आज अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद है, तो ही विल बी एक्सप्लेनिंग कि how a startup can become sustainable, viable at the same moment. जो solution होगा चीज़ होना चाहिए कि एक solution जो है वो लोगों को समझ में आना चाहिए. और क्योंकि एक साथ दो चीज़ें पे काम करने की ज़रूरत है. एक, उसमें से वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए कि आप अपने स्टार्टअप को रन कर सकें. अगर इफ यू विन द प्राइज, सो आप उस फंडिंग को कैसे यूटिलाइज कर सकेंगे. और इन केस अगर नहीं भी करते, टू ट्रांसफॉर्म योर आइडिया इनटू अ बिजनेस, तो बिजनेस में पैसे भी कमाने और सेम इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है. सो इम्पैक्ट क्रिएशन और वैल्यू क्रिएशन के ऊपर आज यहाँ पे बात हो रही होगी. सो विद दिस इंट्रोडक्शन, ओवर टू यू बासित. यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्दर, और फिर हम इस टॉपिक के ऊपर मजीद आगे बात कर सकते हैं. Sure. So, Assalamu alaikum everyone, and thank you for joining. This is Syed Abdul Basit, and by profession, I associated with IT and telecom industry since more than 15 years, and have experience related to product management, project management, and running different technical solutions and working with different IT and telco organization. So earlier, before working with Venture Dive, I worked with Microsoft, Nokia, and look after their mobile app section. So apart from that, I also been part of NIC Karachi as a mentor, startup mentor since the beginning, I guess. And we started and Founder Institute Karachi chapter once again in 2019. So since then till 2022 last year, I was working as a director of our Founder Institute Karachi chapter. So I've been involved with the startup ecosystem since more than a decade, and coach more than 100 startups, guide them and mentor them. So my area of expertise is related to product management, revenue board, and marketing. So here the topic is related to how the social enterprise can be more sustainable, and how, if any entrepreneur is working on a social area, what key things that we need to consider when we considering about cash flow and how to earn revenue, what would be the cost structure. So let me share my screen. So Anil, can you confirm my screen is visible? Yes, it is shared. Okay. So the topic of today's session is, as you know, is creating sustainable and financially feasible enterprises. So before jumping into it, as when I've gone through with the problem statement, so we have 4 different areas. One is related to STEM education, second is related to climate change, third is related to vulnerable groups and the social stress, and fourth is more common, I guess, among these 5 years, women entrepreneurship.
So these are the 4 areas where you were supposed to come up with your own idea. But before jumping into it, let me quickly explain about business. So in either we are talking about a profitable business or a non-profitable business. In business, when we need to start a business, we need to consider 2 things. First is the business plan, or you can say the business model, how the business would work. And second is the execution part, where usually nowadays it's more powered by each and every startup is more powered by technology. But that's not a necessary, like these days where we are having many applications, mobile apps, website. So it's not about your idea would be good enough when we are come up with a hi-fi innovative technology. No, that's not necessary. In business, you need to consider two things. First, your business should be repeatable. Whatever you are doing, it should be on a continuous basis. It should not be like, okay, you earn revenue in the first month, and then for the next 11 months, you're unable to earn revenue. So your business should be repeatable. And second is the scalability factor, that what you are doing today, you should be able to get more in the longer journey after 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, and so on. So these are the two important things, that your business model should be repeatable and scalable. These are the two fundamental things that usually entrepreneurs or aspiring buddy entrepreneurs forget. And once they, and second issue is related to, they always think, okay, we need to do business, we need enough type of funding from VC or from angel investors. No, usually that's not the case. Apart from if you go out from the startup ecosystem, you will see many different communities in Pakistan, like Delhi Wala and Ori community, women community is very popular. They start their business with their own money, by bootstrapping. So this is the fundamental concept that you need to consider when you're starting a business. Instead of looking for investment from the angel investors or VCs, the first step it should be to get revenue and get funding from your own friends, family circle. So that's the main area. So now, as you can see here, there are different type of canvas. We have started with business model canvas. Then we have later on we have a video in terms of lead canvas, and then we have social model business canvas. So before jumping into the social business model canvas, it's important to understand what are the key elements of this. So there are two sides. The first is the customer side, to whom you are offering and what you are offering, what is your target market. And second is your capability, your company side. So either you are working as a ideation stage startup or a growth stage startup, you need to consider, okay, you have one target market in mind and what value you need to deliver. And second is what type of resources do you need in terms of physical resources, in terms of HR, in terms of technical capability, in terms of financial resources, and so on. So this is the important aspect. Based on this example, all of these business canvas started with business model canvas or lean startup canvas, or you can say the social canvas would be the same. It's only a minor changes among all of these. So starting with the first point. I will go into the detail and give some examples that how would you manage your financial, as this session is more related to the financial aspect. But before going into detail, let's talk about the basics. So first of all, you need to focusing on the segment, like who would be the beneficiary, whom I am targeting with my product. So there are 3 examples scenarios. The first scenario is that you know the target market, but you don't know what to deliver. You don't have any exact idea. You just know the problem statement of the target people which they're facing. For example, in suburb areas or rural areas, we have seen the poverty level is quite low here. It's very difficult to earn money. So
So we know the problem statement and we know the target audience. The other scenario would be you don't know the target market, you don't know the problem statement, but you have a idea. That idea inspired from the problem that you face by them yourself or within your circle. And then you came up with an idea. And to validate those idea, you need to explore your target market, because whether you are thinking in the right way or not, you need to validate your idea. So for that, you know the problem, you know the solution somehow, but you need to validate it, and with whom to validate, you need to explore. So for example, if one company came up with let's say a very portable and cost-effective solar uh, powered power bank, solar panel power bank. And if you think, or you can say solar lamp, a lamp with a solar panel, and let's say it costs around, it would sell around for 2,000 rupees or 2,500 rupees, and you need to target the mass market in the suburb or urban rural areas of Pakistan. So then you need to think about, okay, this idea I have, but whether people would buy this for 2,500 rupees or not, you need to validate it from that customer. The third is that you know your strength, or you know your resources capability, and that's the concept of like focusing on low hanging fruits instead of thinking about what type of the problem should be or what type of customers we need to target. You think in a outside in approach by looking into what capability do you have, and based on your capabilities you came up with some idea. So based on your, by analyzing your strength, you came up with any business idea, and then explore the value part and then the customer part. Now coming back to this social business model canvas. So the first segment would be start from here, not from here on the left hand side. It should start from here, the segment. So who benefits from your intervention means whatever the value you are going to offer, who would be the beneficiary. And second, that segment is divided into two phases, beneficiary, and second one is the customer. So the second one would be who are the people or organization who will pay to address this issue. So for example, a very basic example of Google. So in Google is not charging us for doing any search on internet, but they are getting our data, and we are giving up our data free of cost. So the question is how Google is charging, how the Google business model works. So the answer is the business model works based on the advertising side. So they are utilizing our data, get the insights, and then share that information to the marketers, to the advertisers. And through ad campaigns, they drive revenue from there. So similarly, in social enterprise, you need to know who would be my beneficiary, who would get benefit from this product or service, and who would be my customer, who will be paying for this enterprise. The second part is the value part, which is related to value proposition. So the value proposition means, but before going into it, you need to consider that in typical business model case, you have the product or service, but here you need to consider the social impact. So whatever you are delivering, you also need to consider what type of intervention you are offering, whether your solution would be in a form of a product or it's a service. So whether it's a mobile application or whether it's a solar powered lamp that also has a mobile charging facility. Okay, so that, or let's say take an example of riders who are using bikes, motorbikes in rural or suburb areas. So there they don't have a capacity to buy those huge power banks of 3,000, 5,000 rupees. They probably can afford 500 or 800 rupees for any device. So if you came up with an idea of a low cost effective solution, then probably they would interest about it.
So that kind of example is related to the product side. So whether it's a service or a product, you need to decide what type of intervention you are going to play. Third is related to value proposition, where it's divided in two cases: user value proposition and impact. So whatever your value you're offering to the customer. So when you're offering value to the customer, it's divided in three stages. The first, what pain points you are resolving. So if, let's say if they have electricity issue. So take an example of solar powered lamp. So using solar powered lamp, you are empowering the people in rural areas to uh, tackle this electricity issue. And one cause the impact can be like you are empowering the next generation so they can study uh, in the night or in the evening when they don't have electricity. So they can use their solar powered bulbs. So there are many campaigns you have seen from different top brands, CSR campaigns. So this is the impact. The CSR impact can be in terms of social enterprise, the impact, that what impact you are going to deliver to that segment. So probably you need to quantify it like X number in terms of 10% or 20%, you have decreased this issue or you have increased this value. And obviously user value means that what value you're offering. So first, what pain point you are solving. So that would be your painkillers. Second, what kind of wow factor you are generating to delight the customer in terms of gain creators. So take an example of Kareem. So before Kareem, people don't have a thought about it that, okay, if they book a car, they can have that car available at their doorstep. Or they can see where my car is. So if they want to share their location, live location with their friends or family member to track, so they can track, okay, this is where the car is. So 10 years ago, such things not available. So you need to consider what value you are offering in terms of delighting the customer, in terms of solving their pain. Uh, the fifth would be the customer value proposition. So what do your customer want to get out of this initiative, as I mentioned earlier, in terms of the pain point and gains. The sixth point, which is the important point for any enterprise, is the channel. What would be your strategy? How would you be approaching to the customer, whether through a mobile application, whether through a website, whether through a retail outlet, whether through any e-commerce partner, whether through any uh, uh, woman, I mean community कि जहाँ पर आप sell out कर रहे हैं वो चीजें और आप जो local community उनको drive कर रहे हैं. So take an example, a very good example of this social enterprise, though that's been run by Unilever, in the Hindustan Unilever in India. So in Hindustan Unilever, they were thinking they would like to sell their detergent brand and their soap brand. And they captured the urban markets, suburban market, but they're not able to capture the rural market. And one of the biggest reasons of that not reaching to that market would be, guess what? It's channel. It's their distribution strategy. So what they did, they partnered with local community, and where usually the women community, I mean, in rural areas, especially, the woman has more say in terms of they strive to make their family excel and improve on a day-to-day basis. So what they did, they get an idea to sell their detergent, empower the local women entrepreneurs there, and guide them, give the product knowledge, how to sell, and give them small stocks in different communities of those rural areas. And they named this project Shakti Amma project. So Shakti Amma means that every woman would be empowered. So previously, if those women were relying more on their husbands to get some revenue or some finance to their home to run the kitchen, they empower their women so they can be also the self-reliant person in their family, and they can generate financial for their and run their kitchen.
So they sell those stocks to them on a credit base, and then they guide them, give the proper training to them, and then tell them, okay, this is how you need to sell. And you can guess what would happen. It would be a huge success. So the reason is not about the product. Everyone know about product, detergent, soaps, but it's the channel strategy, that how would you tap the market. And this is very important. When you are developing a good product or a segment, but if your channel strategy is not good, you will not be able to outreach the target customers. So this is very important. Then obviously, the right side you are seeing is you can say it's the business part, or you can say the customer part, which I mentioned in the beginning of my presentation. The left-hand side is related to the company part. So to do the job done on the right-hand side, what needs to be done on the left-hand side in terms of key activities or key resources. So let's talk about key resources. So in key resources, there are 4 types of major resources in any business. First is the physical resources, whether it's a office space or any co-working space or any furniture, hardware, infrastructure, all of those physical things. The second would be the people, the HR, human resource. So if you are a social enterprise, you need 2 things in any business. One is the business guy and the other is the tech guy. These are the 2 important things. So one should know how to sell it, but if that person don't know how to make it, then obviously you need a person who know how to make it, how to develop it. So you need one engineering guy, one business guy. So that's important. So if you are a CEO or you are aspiring CEO for any social enterprise, upcoming social enterprise, inshallah, which you are planning to launch, then you also need to think about who would be my CTO, who would be my tech partner. So it's important to have a like-minded person as soon as possible before relying on any partner or get it developed through any software company. Third would be the intellectual property, your content, your copyright, your secret sauce, your key aspect of business in terms of your trade secrets. And fourth is the finance. So finance can come from your family, your friends, through your savings. That would be the first step. That's called the bootstrapping stage. The second stage would be to earn revenues to seek funds from any angel investor. And third would be from any VC. And so you know what to do, whom to do it for. I mean, who would be the target market, whatever the activities you are planning to do, who would be served, what resources do you need, what channel do you need. Now the thing is, what type of activities you need to perform. Okay, and activities is to not earn $1 million rupees. The activities need to execute this business model. What steps I need to take? You need to question yourself, what step I need to take to execute this business model. So basically, either we take an example of business model canvas or lean startup canvas or the social enterprise canvas. Basically, the idea of these canvas is to put all the idea of startup idea in one single page. And then it's the job of an entrepreneur to validate those ideas on a continuous basis with their prospect customer, prospect partners, prospect business partners, and so on, and with all the key stakeholders. So the key activities should have what program and non-program activities will your organization being carrying out. Okay, so what would be the marketing campaigns? What would be your product development activities? What would be your outreach activities to launch this business and to execute this business model? This is very important. And now come to the most important part, which is the critical area of this presentation, is the cost and financial area.
So to do all of those things, first you need to know what would be my cost factor, how much cost I am burning in a monthly basis, on a weekly basis. And for all these value I'm offering to this customer, how much money I would generate. That would be your revenue. Okay. So on one hand side, you are generating revenue, which is your, uh, in terms of cash flow, it's your cash generation. And in terms of cash flow, the cost structure would be a cash consumption. That money you are burning out, and revenue means how much money you are generating from that social enterprise. And surplus means where do you plan to invest your profit. So if you earn, let's say, 500,000 rupees through revenue, and your cost would be like 300,000, then 200,000 you have a surplus. The point is, where you be heading and investing this surplus? Will you be spending it on yourself? That would not be a wise strategy when you are working in a social enterprise. Would you be investing in your team development? That also would not be a wise strategy. Because in social enterprise, it's more about that how you are make your startup more sustainable. Remember the topic, creating sustainable and financially feasible enterprise. So your job is not to generate revenue, generate profit. Your job is to generate profit, yes, but the second step would be is to make your startup sustainable and financially feasible. So how you need to get it done. So now this is important part. So cost structure and revenue. This is the breakup. So when we are talking about cost structure, so I'm just stopping right now. If you have any questions or if you have any question, please ask. Yes, Ali. Is there any question? Okay, I assume everything is clear now. So going back to the startup financial. So there are two factors. The first is the cost part, जहाँ पर आपकी कितना पैसा आपका लग रहा है उस बिजनेस को स्टार्ट करने में, और दूसरा एंगल है कि आप कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं. So in the cost structure, you have two areas. One is the cost driven and second is the value driven. ठीक है. तो आप लेट्स से आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उसको बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है. Let's say if you are developing a solar powered lamp, let's say आपकी कॉस्ट उसमें लग रही है 800 रुपये. बट आपने कुछ कैलकुलेशन की और आपको पता चला कि ठीक है, 800 की अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ कि मुझे कॉस्ट आ रही है, तो मैं इसको 1500 रुपये का बेच सकता. बट आपने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो अब तक किसी ने इन्वेंट की ही ना हो. ठीक है. और अब आपको ये लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, बल्कि ये एक वैल्यू इनोवेशन, ये मेरे कस्टमर्स के लिए एक डिलाइट फैक्टर क्रिएट कर रही है और अब तक किसी ने भी नहीं किया. So then it's important you need to consider the value part, where you would be basically you would be uh, charging money based on what value you are serving. So that's two important part. And for every business, there are two fundamentals. So one is the fixed cost and second is the variable cost. So in the fixed cost, it's about कि कितना पैसा मेरा उस बिजनेस को चलाने के लिए लगना ही लगना है, चाहे मेरी सेल हो या ना हो. तो दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है वेरिएबल कॉस्ट, कि कितना पैसा मुझे जो है वो मेरा लगेगा अगर मेरी कोई प्रोडक्ट सेल होती है. तो फॉर एग्जांपल हम अगर सोलर पावर्ड लैम्प की बात करें, तो सोलर पावर्ड लैम्प पे जो भी इक्विपमेंट लगना है उसके लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी. बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई कुछ इक्विपमेंट चाहिए उसको बनाने के लिए, कुछ लोग चाहिए,
और लोग अगर मुझे परमानेंट बेसिस पे चाहिए तो दैट वुड बी माई फिक्स कॉस्ट। बट अगर कोई कॉस्ट मेरी इनकर हो रही है, अगर कोई कॉस्ट मेरी इनकर हो रही है उनकी बेस्ड ऑन द वेरिएबल थिंग, तो दैट वुड कम्स अंडर माय वेरिएबल कॉस्ट। Similarly, when we talk about revenue streams, so it's about मेरे कौन कौन से तरीके से मैं अपने पैसे कमा सकता हूँ। तो या तो मैं कोई प्रोडक्ट बना के उसको सेल आउट कर सकता हूँ, मैं कोई लोगों को एक ऐसी सर्विस दूं कि जिसको वो यूज करें, तो फिर सर्विसेज के मैं चार्जेस ले रहा हूँ, राइट। थर्ड इज द सब्सक्रिप्शन फी। सो वेरी पॉपुलर नेटफ्लिक्स, तो आपको कंटेंट अवेलेबल है या यूट्यूब एड फ्री अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट सर्विस एंड देन यू आर चार्जिंग मनी। फोर्थ इज द लैंडिंग, रेंटिंग और लीजिंग, कि आप कोई अपनी कमोडिटी बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको आप रेंट पे देते हैं। फिफ्थ इज द लाइसेंसिंग पार्ट एंड लास्ट इज द एडवर्टाइजिंग पार्ट, वेयर यू आर ईदर generating revenue through referrals or marketing or through affiliate marketing. So I think this is it for till now. I would be jump to the next part once after I would like to have some questions. So Anil, do we have any questions? I have a question. So in case of winning the grant, how they can differentiate, yeah, how they can split that funding. Can you repeat the Challenge last ये part? कि How would you explain? how they will be investing or utilizing that funding in case of their bootstrap investment as well. कोई 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए भी लगा रहा है तो where they should be investing it, क्योंकि ये वो सवाल होता है जो इन्वेस्टर्स भी आपसे पूछ लेते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कितने पैसे खर्च होने चाहिए और प्रोडक्ट मार्केटिंग पे कितने होने चाहिए। सो व्हाट्स द स्वीट स्पॉट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, करीम की एग्जांपल हो सकती है कि जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कितना टाइम और पैसे लगे होंगे और इस प्रोडक्ट को मार्केट करने पे कितनी मेहनत उनको करनी पड़ी होगी। Yeah, so I think if you are taking a common approach where people used to invest a lot in their resources but pay a, a very less amount in developing a good solid product. So we used to see that, okay, in the early stages, startup boom, everyone is seeing their names, but after a couple of months or years, no one would see. And the major important factor would be is that people are investing more on the marketing and advertising campaigns instead of developing a rock solid product with a very break-even approach. I mean, break-even approach means that you're developing a product, your cost is not over exceeding your revenue, so you have some margins left. So this is very important. But अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे ही इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, हत्ता कि आपने कोई अच्छी प्रोडक्ट ही क्यों ना बनाई हो, तो देन आपकी मार्केटिंग आपको पुश करेगी कि आप और ज्यादा पैसे लगाएं कि आप और कस्टमर्स को लेकर आए। बट अगर आपकी प्रोडक्ट सस्टेनेबल ही नहीं होगी, उस करंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट ही नहीं कर सकता वो ट्रैफिक, तो देन देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टिंग टू मच मनी इन योर मार्केटिंग और इनफैक्ट इन योर पीपल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लीन की बात करते हैं, लीन बिजनेस मॉडल की भी बात करते हैं, कि आप सबसे पहले अपने जो बिल्ड वाला जो फेज है उस पर फोकस करें। उसके लिए यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट दैट यू वुड लाइक टू डेवलप। उसको कितना आप कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हैं और कितना लीन कर सकते हैं। लीन का मतलब मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, मीन्स कि आपकी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ना हो रही हो आपकी कॉस्ट में, कि आप अपनी प्रोडक्ट को कोई कॉस्मेटिक चेंजेस ना कर रहे हो बार बार, ठीक है। उसको 3-4 महीने में प्रोडक्ट बनाए, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसको बनाए, उसको लॉन्च करें। कहते हैं ना कि गाय कावासाकी यूज्ड टू से डोंट वरी बी क्रैपी। सो वी नीड टू फॉलो इट। पीपल वरीड अबाउट कि यार मेरा पहला वर्जन शिप होगा, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते ही रहेंगे, तो आप लोगों की परवाह करेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं। So especially in the social enterprise case, you need to come up with your ideas and launch it, then get the feedback and work on your product. First, work on the product, make it sustainable, scalable, then you can think about expanding your team, spending money on your marketing and campaigns. Because social enterprise में आपके पास
मार्केटिंग पे आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं हो, आप पार्टनरशिप डेवलप करते हो, आप अपने इकोसिस्टम में उन पार्टनर्स को देखते हो जो कि उस प्रॉब्लम को एडवोकेट कर रहे हैं, आप उनके साथ एसोसिएट करते हो, ऑटोमेटिकली यू वुड बी गेटिंग द मार्केटिंग डन थ्रू दोस चैनल्स. You need to be very wise in that part. Okay, so one question I have, like, can we have more than one business model? So yes, you can have it. You can have different revenue streams. So in fact, instead of having, so before launching any business model, you can come up with 2, 3 different iterations of your business model. So if business model one not work, you come up with business model two or business model three. But the whole idea is about validating your business model and with your prospect customers and stakeholders. So in fact, you need to focus more on the revenue streams, that how you are generating revenue streams. One question is about, yeah, Neil, you would like to add something? Okay. So one question is about like combining advertising-based model, subscription-based model, and commission-based model of revenue. You can do it, but at least then it would be very confusing for you that who would be your major in terms of स्टार कैटेगरी और स्टार प्रोडक्ट. तो अगर आप सारी चीजें एक साथ मिला लेंगे तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा. तब आप कर तो सकते हैं, जिस तरह से हम बहुत से स्टार्टअप एग्जाम्पल देखते हैं कि वो लोग एडवर्टाइजिंग पे से भी पैसा कमा रहे होते हैं, कमीशन से भी कमा रहे होते हैं, से भी कमा रहे होते हैं. बट एट टू बिगिन विद यू नीड टू फोकस ऑन ओनली ऑन कपल ऑफ द थिंग्स. आप पहले एक चीज से स्टार्ट करें रेवेन्यू से, जब वो स्टेबल हो फिर आप कोई दूसरी चीज को स्टार्ट करें. अगर आप सारी चीजें एक साथ स्टार्ट कर लेंगे तो देन यू वुड बी कंफ्यूजिंग कि आपको अपना फोकस किस पे करना है. बिकॉज जितना शुरू के स्टेजेस में आप बहुत सारे ऑप्शन या वेराइटीज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना शुरू कर दोगे, देन इट वुड बी अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन फॉर योर कस्टमर्स कि यार क्या चीजें मैं खरीदूं, क्या चीज ना खरीदूं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर अ सोशल एंटरप्राइज कि आप कोई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसको सॉल्व करो, ना कि आप हर कैटेगरी को सॉल्व करना शुरू करो. We have another question like, I've narrowed down my revenue stream to the list: toolkit, storybook, subscription to the web application, individual for parents, workshop for parents, training programs. At this stage, I am in the process of developing the product which can be sold through these methods. Okay. Is it too big of shot at this stage of my startup? I don't think. I think it's a good way that you are coming up with different product and offering for your customers. And you need to focusing on then what type of, मेरी कौन सी प्रोडक्ट को लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, किस प्रोडक्ट से मुझे ज्यादा पैसा जनरेट हो रहा है, तो वो आपको करेगा, वो कैश फ्लो में करेगा, जो आई वुड शो इट टू यू. और what do you mean by lean business model? So basically in lean business model we are focusing on to minimize the waste, जो मैंने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले. और आप वैल्यू पे फोकस कर रहे होते हो कि आपके कस्टमर को वैल्यू क्या चाहिए. वैल्यू वो जो कस्टमर ने वैलिडेट की हो, वैल्यू वो नहीं जो आपको लगता है. ये बहुत बड़ी मिस्टेक यूजुअली स्टार्टअप्स करते हैं. ठीक है, दे सिट इन देयर ड्राइंग रूम और इन देयर फ्रेंड्स हाउस और कॉफी शॉप एंड दे केम अप विद अ यूनिका मोमेंट. वहाँ जबरदस्त एक आइडिया आ गया, बट वो आइडिया कितना फाइनेंशियली और सोशली और टेक्निकली वायबल एंड फिजिबल है, ये इंपॉर्टेंट. तो उसको वैलिडेट करने के लिए आप उन चीज़ों को फोकस कर रहे होते हो जो कि आपके कस्टमर्स के लिए वैल्यूएबल होती है, और अपने वेस्ट को आप मिनिमाइज कर रहे होते हो, जो कि अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं. जी अनिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. वो एक चैलेंज था जो मैं भी फेस कर रहा होता हूँ. लीन बिजनेस कैनवस से रिलेटेड सवाल आ गया. सो जस्ट इन केस इन टर्मिनोलॉजीज को अगर आप एक दफा रिपीट करते कि हम याद हो जाए कि व्हाट मींस व्हाट, या कोई और अगर आप चाहें तो ये चीज बता दें. जैसे एक अहम मैं भी रिसेंट एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था क्रैश पर, तो उसमें भी थी कि रेदर देन फोकसिंग ऑन अ प्रोडक्ट और सोल्यूशन वी शुड फोकस ऑन
टारगेट ऑडियंस, जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि हम किसके लिए और किसका मसला हल करने की बात कर रहे हैं। अब ये जरा सा दोबारा इनको एक दफा चेक कर लें कि दे गॉट द आइडिया, सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, या you can explain कि how maintain their north star, कि if at the end of this hackathon, if they have a product or solution developed, how they can make sure कि is on the right path और वो सही तरफ जा सही रहे सही हैं। ठीक, सही है, श्योर। देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये है, अब आप कहेंगे कि अगर हमें हमारा आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, बट हमें ये नहीं पता कि इसको सेल कैसे करना है या किसको करना है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एम्पैथी। आप अपने आप, अपने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप कस्टमर का पेन पॉइंट का नहीं पता ना, ये एग्जांपल ऐसी है, डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना दर्द लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब ये है वो है। अगर डॉक्टर एम्पैथाइज नहीं करेगा तो वो आपको अपनी एक मशहूर जमाना प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिख के दे देगा, भाई ये जाओ खरीद, डेंटिस्ट स्टोर, फार्मेसी स्टोर से आप खरीद। लेकिन अगर वो एक अच्छा डॉक्टर है तो वो आपके प्रॉब्लम को, आपके पेन को समझेगा, एम्पैथाइज करेगा। एम्पैथाइज और सिंपैथी में फर्क क्या होता है? एम्पैथी बेसिकली इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग द पेन दैट यू आर फेसिंग। तो मैं अगर अगर सोशल एंटरप्राइज है ये, तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, उस प्रॉब्लम को मुझे कैसे समझना बहुत जरूरी है कि मैं इसको कैसे समझना सकता हूँ। पुटिंग योर सेल्फ इन कस्टमर शूज, दिस इज एम्पैथी। तो आपके पास अगर आपको ये नहीं पता कि आपके कस्टमर्स कौन है, आई मीन कस्टमर्स तक आपके पास रसाई नहीं है, बट आप उस कस्टमर का एक पर्सोना बनाए कि वो कस्टमर किस एज ग्रुप का है, उसकी क्या डेमोग्राफिक है, उसकी क्या साइकोग्राफिक है, वो पूरे 24 घंटे में व्हाट कस्टमर इज डूइंग इन देयर 24 आवर्स, 24 घंटे में वो क्या क्या काम कर रहा होता है, किस पॉइंट पे आपको लगता है कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सुन सकता है, समझ सकता है, आपकी बात, आपके आइडिया को के बारे में इंटरेस्ट शो कर सकता है। तो जब तक आप अपने आप को बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कस्टमर के एंगल से नहीं देखेंगे, तो आपके अगर 4 मेंबर्स हैं ग्रुप में, तो एक मेंबर को एक कस्टमर के एंगल से ये देखना चाहिए, तो कस्टमर का रोल प्ले करे, और बाकी 3 मेंबर्स उसको अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करें, और फिर वो कस्टमर पर्सपेक्टिव से वो चीजें बताए कि नहीं यार, अच्छा ये तो मुझे प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन ये तो ये प्रॉब्लम्स, और वही प्रॉब्लम्स को बता रहा हूँ जो कि एक्चुअली वो फेस कर रहे हैं। कोई इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर ही रहा हो, हाँ उस प्रॉब्लम को रियलाइज नहीं किया हुआ। तो एक मेंबर को ये करना चाहिए कि वो कस्टमर पर्सपेक्टिव से कस्टमर को रोल प्ले करे, और बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो अपना आइडियाज पिच करें। तो एम्पैथी की जब हम बात करते हैं, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है डिजाइन थिंकिंग का, जिसमें हम 5 स्टेजेस की बात करते हैं। डिजाइन थिंकिंग इट्स अ वेरी पॉपुलर फ्रेमवर्क बाय आईडीओ कंपनी, सब प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिशनर ऑफ डिजाइन थिंकिंग। So in design thinking, basically there are 5 stages. The first stage is the empathy, and second stage is the problem statement. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे तो सभी आ जाते हैं, लेकिन पता चल ही जाती है, बट उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने सही लिखी या नहीं लिखी हुई, वो आपको एम्पैथी मैप बताता है। एम्पैथी मैप में आपको हम बात कर रहे होते हैं कस्टमर क्या सोच रहा है, व्हाट कस्टमर थिंक, व्हाट कस्टमर हियर, व्हाट कस्टमर से, कस्टमर पूरे 24 घंटे में आपकी उस प्रॉब्लम को कैसे एडवोकेट कर रहा है, दूसरे लोग कैसे इसको देख रहे हैं, एंड फिर आप कस्टमर की जो प्रॉब्लम से उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, सो बासित सेशन में से थोड़ा ड्रॉप आउट हो गए, बट आई थिंक सो ही विल जॉइन अस बैक। एक क्वेश्चन हमारे पास वैसे और आया था, जस्ट आस्क हिम। वो बस अभी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हमारे जो ऑनलाइन सेशन फेसबुक पे हमें अटेंड कर रहे हैं, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, चाहे डिजाइन थिंकिंग से रिलेटेड जो अभी वो बात कर रहे थे, एम्पैथी मैपिंग उसके अंदर होगी उससे रिलेटेड है, या जो कल आपने सेशन अटेंड किया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसको कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, या आपकी जो स्पेसिफिक जिन चैलेंजेस के ऊपर आपका काम कर रहे हैं उनसे भी रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है, सो यू गाइस कैन आस्क ऑन सोशल मीडिया एज वेल। अगर फेसबुक पे सेशन को देख रहे हैं, या अगर आप जूम पे भी हमारे साथ सेशन के अंदर मौजूद है, यू गाइस कैन आस्क दोस क्वेश्चंस। एक सवाल हमारे पास अभी और आया हुआ था,
रेवेन्यू स्ट्रीम से related। जो जब लास्ट बस में भी ज्वाइन कर लेते तो वो आपको ये आंसर कर देंगे। इफ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चन तो आप वो भी बता सकते हैं हमें। एक चीज़ और है, हमारी टीम आपके साथ कॉन्स्टेंटली जो है फीडबैक फॉर्म शेयर कर रही है। सो अगर आपने पिछले किसी सेशन का फीडबैक फॉर्म फिल नहीं किया है, मिस हो गया आपसे, तो उसको फिल कर दीजिएगा। फॉर्म्स इन सारे सेशंस का फॉर्म सेम यूज हो रहा है। अगर आपसे कोई सेशन मिस हो गए तो यू कैन गो बैक एंड वॉच दो सेशन ऑनलाइन, और उसके बाद आप फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर्पज यही है कि अगर इसमें कोई चीज़ मिस हो गई है, इफ देयर इज अ टॉपिक जिसके बारे में बात करने की जरूरत है, जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो वो हमें मालूम हो जाएगा। वी कैन कंडक्ट सेशन थ्रू द हैकाथॉन एज वेल। उन टीम्स के साथ जो मजीद आगे कंटिन्यू कर रही होंगी तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। मोमिन, आपने हैंड रेज किया है, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन द Q&A। जो नीचे ऑप्शन आया हुआ चैट के बराबर, आप वहाँ से सवाल पूछ सकती हैं। वो हमें नजर आ जाएगा। इवन अगर फीडबैक फॉर्म के बारे में भी अगर आप लोगों ने कोई फीडबैक देना है, तो यू गाइस कैन शेयर दैट एज वेल। आप जो Q&A का जो ऑप्शन नीचे आपको नजर आ रहा होगा, आप उसके थ्रू वो भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कि अगर वो फॉर्म के अंदर में क्लैरिटी चाहिए तो वो बता दें, तो वी कैन एट दैट एज वेल। ओके। शान बासित है, मैं वापस ज्वाइन कर लिया, तो काइंडली प्रमोट कर दीजिए। ओके, ठीक है, बस वापस आ गए हैं बासित, तो भी इन द पैनलिस्ट रूम। जी बासित। Sorry, I'm sure there is some connection issue. So yeah, so I was discussing about कि आपको सबसे पहले अपनी जो भी टारगेट मार्केट है उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत है। इंस्टेड कि आप अपनी सोल्यूशन बनाएं और उसका ढोल पीटने शुरू कर दें, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को वैलिडेट करें और उसमें से कोई एक मेंबर जो है वो एम्पैथाइज करे और वो कस्टमर का रोल प्ले करे। इसको आसान लफ्जों में हम कहते हैं कि प्ले अ डेविल एडवोकेट रोल, कि जहाँ पर आप हर चीज़ जो है ना वो एक तरीके से निगलेक्ट कर रहे हो, just to not to demotivate the other team member but to show them the real picture कि यार रियलिटी क्या है। अगर कोई कस्टमर वो टीम कहती है कि इसको हम 5,000 का बेचेंगे, तो आपको तो पता है कि भाई वैसे ही गरीब बेचारा जो है वो 15,000, आठ आठ 10,000, 15,000 वो हार्डली कमाता है, वो आपको वो प्रोडक्ट 3,000 क्यों खरीदेगा। तो यू नीड टू शो देम द रियल पिक्चर। I think we have 5 minutes. I would like to discuss quickly the cash flow because it's important part, I think. So मैं बस quickly इसको दिखाता हूँ and then we can cater if there is any other question. Hardly it would take few minutes. I will share the template with you, Anil. You can post it or share it with the audience as well. Okay. Can you see my screen? It's visible। Okay. So basically, yes. So when we talk about business, so they are business में दो चीज़ होती है, पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ से जा रहा है। आपको कैश का इनफ्लो क्या है और कैश का आउटफ्लो क्या है। सो ये एक सैम्पल टेम्पलेट है, और अगर इसको हम सोशल इंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सोशल इंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो कि यार आपके पास कितने यूनिट्स जो हैं वो सेल आउट होंगे, आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या क्या है, ठीक है, और आपके पास आपके फिक्स कॉस्ट फैक्टर्स कौन से और आपके वेरिएबल कॉस्ट वाले फैक्टर्स कौन से। तो लेट से अगर मैं 7 लाख रुपए लगाता हूँ जीरो पीरियड में, आप मैं 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ अपने ऊपर, बूट स्ट्रैप अपनी सेविंग्स को, इन सब चीज़ों को यूज करते हुए, और लेट से 2,80,000 रुपए की मेरी कॉस्ट आती है शुरू के पहले फेज में, जिसको हम जीरो पीरियड। तो लेट से आपने बिजनेस स्टार्ट करना है जनवरी 2024 से, ठीक है। तो जनवरी 2024 से स्टार्ट बिजनेस करने के लिए आपको उससे पहले कुछ कैपिटल आपने जनरेट किया, फंडिंग से जनरेट नहीं किया, आपने अपनी बूट स्ट्रैपिंग और या आपको जो प्राइज मनी मिलता है लेट से जिस बिल्ड बाय हर का है, उसको आपने यूटिलाइज किया, एंड बेस्ड ऑन दैट इनिशियल कैपिटल दैट यू इंजेक्ट इनटू योर स्टार्टअप, आपके पास 2,80,000 की जीरो पीरियड में आपकी कॉस्ट इनकर होगी। तो आपके पास बैलेंस जो होगा वो आपके पास 4,20,000 का होगा। अब ये जो बैलेंस है ये आपको कंटिन्यू चलता रहेगा, और हर महीने की जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपकी हर आने वाले महीने की जो ओपनिंग बैलेंस में ऐड होती रहेगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके यूनिट्स कितने हैं, और यहाँ पर आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे कितने प्रोडक्ट्स आप अपने बेच रहे हैं।
तो इंस्टेड आप अपनी 5-6 रेवेन्यू स्ट्रीम पे जाओ, आप अपनी कोई हीरो प्रोडक्ट या हीरो सर्विस को फोकस करो कि ये प्रोडक्ट मैंने बेचनी है, इस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस मेरी आ रही है, उसको हम कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट मेरी कितनी इनकर हो रही है, प्राइस में कितना रखूंगा, प्राइस किस बेसिस पे रखूंगा, वो जो हमने आगे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, और उसके बेसिस पे आपकी एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक रेवेन्यू स्ट्रीम का अपना बनाएं कि मेरी ये प्रोडक्ट है और इससे मुझे इतना पैसा मिलेगा, और फिर जो भी आपके लिमिटेड फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो रखें, बाकी डिलीट कर दें। तो देन यू विल बी एबल टू नो कि आपको अगर इतना पैसा आप इंजेक्ट कर रहे हो तो पूरे साल में आप कितना रेवेन्यू कमा सकते हो, आपके कैश फ्लो आपका नेगेटिव होगा, नेट कैश फ्लो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। So I will share this Anil with you, this tablet. Also, you can Google it, social enterprise cash flow. You can also find out over Google over the internet. So that's very important to consider. एक क्वेश्चन और आया है बेनिफिशियरी और कस्टमर से रिलेटेड। मैं उसको जरा क्लियर कर देता हूँ कि उनका सवाल बिल्कुल सही था कि बेनिफिशियरी इन केस ऑफ एजुकेशनल सेशन, वो बच्चे आपके बेनिफिशियरी हो जाएंगे, वालिदैन आपके जो है वो कस्टमर्स हो जाएंगे, या दो स्टूडेंट चिल्ड्रन कैन बी योर कंज्यूमर्स एज वेल, सो दे आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, ये यूजर्स कहलाएंगे। पेमेंट वाला सोल्यूशन जो है पेरेंट्स के पास बिल्कुल करा जाएगा। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन था वो था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आपके जो है कस्टमर्स बन सकते हैं, तो ये तो सिंपल था। कैन वी रेवेन्यू, अच्छा ये सवाल एक रिपीट हुआ है कि कैन वी रेवेन्यू स्ट्रीम दैट इज नॉन प्रॉफिटेबल। रेवेन्यू रेवेन्यू तो इट्स प्रॉफिटेबल। रेवेन्यू मीन्स आपका एक कैश फ्लो आप जनरेट कर रहे हो। आप अपनी कोई सोशल कॉज एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं, मतलब ब्रांड इक्विटी, अपनी ब्रांड को, अपनी पीआर को डेवलप करने के लिए आप कर सकते हैं। बट यूजुअली जब हम सोशल एंटरप्राइज की भी बात करते हैं तो दैट शुड हैव अ रेवेन्यू स्ट्रीम, अदरवाइज वो तो फिर एक एनजीओ हो जाएगी, जो कि पूरे हमारे थीम का पार्ट नहीं है। एनजीओ होना चैलेंज नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन इज आल्सो एन एनजीओ, लेकिन चैलेंज वही है कि एनजीओ बंद सब हो जाती है जब उसको फंडिंग नहीं मिल रही होती। यहाँ पे जो इनको असल आइडिया क्रैक करना है वो यही है कि एनजीओ जैसा काम कर रहे हैं लेकिन बंद नहीं हो जाएगा फंडिंग ना हो तो। सो यस, दैट्स मतलब मैंने उस माइंडसेट से किया था। यूजुअली जिस तरह से लोग कहते हैं ना कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो बस ठीक है हम अपना काम कर रहे हैं, बट आई थिंक नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इट्स टू not thinking from the non-profitable organization perspective, think from the social enterprise. There are many examples. हम अखुवत की बात करते हैं, मेजर एग्जाम्पल, इस तरह के और भी बहुत सारे सोशल एंटरप्राइज हैं जो स्टार्ट बहुत बेसिक लेवल पे हुए। उन्होंने कोई इतनी मेजर कॉस्ट इनकर नहीं की, बट जैसे जैसे वो बढ़ते चले गए उन्होंने अपने आप को सेल्फ रिलाइंट किया। सोशल एंटरप्राइज का जहां पर एक एंगल है रेवेन्यू जनरेट करना टू मेक योर स्टार्टअप सस्टेनेबल, वहां पे एक एस्पेक्ट ये भी है कि अपने आप को आप सेल्फ रिलायंट करें, इतना पैसा कमाएं कि आप किसी और पे रिलाई ना कर रहे हो फंडिंग के लिए, आप खुद ही अपने कैश फ्लो को दोबारा रिसाइकल कर रहे हो और आप इसको री इन्वेस्ट कर रहे हो, और इससे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो। So I think we are already reached our limit. So thank you, Andeep. I think you're on mute. Yeah, thank you, थैंक्स Andeep, लॉट for inviting. बासित। Yeah, सवाल बहुत सारे हैं, सो फिर इंशाल्लाह मजीद सेशंस अगर मिड बाहर के बाद भी हमें हमारे स्टार्टर्स को या जो पार्टिसिपेंट्स को जरूरत पड़ी तो हम आपसे कनेक्ट, अगर आप हमें अलाउ करते तो करवा देंगे। एंड वी मोर सेशंस। और फूड फॉर थॉट आपने दे दिया है कि अखवत की एक बड़ी जबरदस्त हमारे सामने एग्जांपल है कि दैट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सोशल कॉज भी काम कर रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि जब वेंचर टाइप का नाम आता है, करीम बिल्कुल साथ कनेक्टेड है कि करीम जो है yes. मुझसे भी किसी ने इसी तरह से की थी कि We also work with many different social enterprise. Like we have worked with Vital Pakistan. It's a health-based organization. We work with Pori.pk. It's a STEM-oriented organization. So the person need to go through it so they can get to know about these things. But the point is, the bottom line is nothing is impossible. Whatever you have in your mind, that is doable. It's you need to focus on your guts. You need to believe in yourself that it's doable, and focus on that one problem. Don't think about many problems. Thank you.
थैंक्स लॉट बासित। सवाल हमारे पास अब मजीद कोई नहीं है, देयर आर आंसर्ड। मैं एक दफा दोबारा एहतियातन चेक कर लेता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर तो हमारे पास कोई क्वेश्चन, वहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। सो थैंक्स लॉट वंस अगेन कि आपने शॉर्ट नोटिस के ऊपर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ये बार बार एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, ये रीज़न यही है कि फिर हमारी मेमोरी जो है वो रिफ्रेश रहती है, क्या चीज़ें कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। और एज आई सेड अर्लियर कि फूड फॉर थॉट है। फॉर प्रॉफिट कंपनी करेंगी में दोबारा एग्जाम्पल, वो भी जो उनके जॉब क्रिएशन, वो तो एक्चुअली वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, बट जॉब क्रिएशन भी। एंड द वे दे स्टिल प्रोवाइड यू दिस विद दिस ऑप्शन के आप यू कैन, वो मोस्टली रमजान की तरह कैंपेन करते हैं कि यू कैन फ्रॉम DCF एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो डोनेशंस का वो ऑप्शन दे रहे होते हैं। सो कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइजेशन दे कमिंग विद सॉल्यूशंस कि हम किस तरीके से जो है सोशल जस्टिस के ऊपर काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू। एक मिनट देख ले तो एक सवाल मुझे भी दोबारा नजर आए। Could you please share the cash flow that you just showed to us? सुन या सकते कह श्योर, दिए कि आई वो विल शेयर कर देंगे। डेफिनेटली। आसान तरीका भी उन्होंने बता दिया कि अगर हम सर्च करें तो मिल जाएगा। एक टूल आपको ड्यूरिंग द हैकाथॉन भी मिल रहा होगा। सो आई थिंक सो थोड़ा सिंपल होगा इसमें, लेकिन ये एक नॉट कॉम्प्लेक्स बट डिटेल सर जो टूल था जो उन्होंने बताया था वो यही था कि आप पूरे साल में किस तरीके से काम कर रहे होंगे। So, बस अगर आप देखें तो फिर हम इनके साथ शेयर कर देंगे। सो इंशाल्लाह I ये फिर will आप be सबकी। posting the link on the Zoom chat, so you can share it. थैंक यू। ये सवाल फॉरन एड्रेस हो गया कि उन्होंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप इस लिंक को यूज कर सकते हैं। और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे या कॉपी क्रिएट कर लीजिएगा ऑनलाइन ही। फिर आप उसको जो है उसमें जो सही भी थी कि किन हेड्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है यूटिलाइज, so you can change that unit according to your own project solution or product that you guys are building. Once again, thanks a lot, Basit. आपने हमें टाइम दिया, काफी कॉम्प्लेक्स चीजों को आपने बड़े अच्छे तरीके से समराइज करके एक्सप्लेन कर दिया। Thank सो you so much. थैंक्स लॉट, थैंक यू, थैंक Thank यू। you very much. Take care. Assalamu alaikum. Bye-bye. फीडबैक फॉर्म आप लोग जरूर भर लीजिएगा, वो मैं एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, हमारी टीम आपके साथ फॉर्म शेयर कर देगी। सो और अगर पिछले भी कोई फॉर्म मिस हो गए तो वो फॉर्म जरूर शेयर कर फिल कर दीजिएगा। थैंक यू। हाफिज।